Hello friends, welcome back to the series of lecture. I am Advocate Gaurav Singh Adhana. This is the 47th lecture of this series of CRPC and we are continuing with the topic arrest. In today's lecture we would start with section 42. 42 is basically a case of non-cognizable offense. In non-cognizable offense what happens is, suppose an accused who has committed a non-cognizable offense and accused is found by the police officer. Police officer cannot arrest him without warrant. Non-cognizable offense के लिए police officer has to obtain a warrant from the magistrate. In fact, investigation के लिए भी पुलिस ऑफिसर को 155 क्लॉज 2 में भी परमिशन लेना पड़ेगा. लेकिन one thing the police officer always can do, the police officer can ask him his name and address. The police officer can ask him his name and address, उसका नाम और पता पूछ सकता है, and make him sign a bond. What bond? That whenever required I will appear. तो अगर एक नॉन कॉग्निजेबल वाला अक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर के सामने है and he knows that he has committed a non cognizable offense, अक्यूज्ड को भी ये पता है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पुलिस ऑफिसर को भी पता है उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है that any cognizable offense is involved in that case. Then in that case the police officer can ask him his name and address. Accused का name and address पूछ सकता है पुलिस ऑफिसर and ask him to sign a bond. So ask his name and address of the accused and may require him to sign a bond. If this person tells his correct name and address and he is willing to sign the bond, then in that case police officer would not arrest him. But if the police officer suspects that he is accused is giving the police officer a wrong name or a wrong address, or the case may be that accused refuses to give his name and address, then the police officer would arrest the accused and take him to the police station. And in the police station, if this accused give the right name and address and signs a bond, then he would be released. The police officer will release the accused. But in the police station also the accused not give the correct name and address, then the police officer can detain him into the custody until he gave the right name and address. लेकिन जैसे ही 24 आवर्स पूरे होने होंगे, जैसे जिस प्रकार से कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, 24 आवर्स होने से पहले उसको आपको पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कराना होगा. So this section is about all that and as simple as that. Let's see. When any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense, या तो पुलिस ऑफिसर के सामने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दे या फिर पहले कभी किया हुआ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और नाउ ही इज प्रेजेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर. In that case he refuses on demand of such police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false. He may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. So he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. अब मान लीजिए accused अपना नाम पता बताता है, now the police officer could make the phone call there, जो नाम पता बताता है उससे फ़ोन नंबर वगैरह कोई पूछता है आस पड़ोस का या फिर all that, or otherwise verify whether the name and address is correct or not, and until then he could arrest the accused and keep in custody. अगर उसको शक है कि वो गलत नाम बता रहा है, गलत नाम और पता बता रहा है. When the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without sureties to appear before a magistrate if so required, provided that if such person is not resident in India, the bond shall be
secured by a surety or sureties resident in India. अब accused अगर इंडिया में नहीं रहता है then surety is must. It is written the bond shall be secured by a surety or sureties if such person is not resident in India. Otherwise bond execute हो सकता है with or without sureties अगर इंडियन है तो, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन है इन दैट केस, या ही मे बी ए फॉरेनर, इन दैट केस the police officer will make him execute a bond with surety. Should the true name and residence of such person not be ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient surety, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction. वो 24 घंटे की काउंटिंग वैसे ही होगी जैसे 57 में करते हैं. इन दिस केस ऑल्सो द ट्रैवलिंग टाइम एक्सेट्रा वुड बी एक्सक्लूडेड, तो वो 24 आवर्स की जो काउंटिंग है वो वैसे ही होगी, बिकॉज बियॉन्ड 24 आवर्स यू कैन नॉट टेक, the police officer could not put him the accused into the custody. He has to produce him before the magistrate. So point to be remembered for this section is that the accused has committed a non-cognizable offense before the police officer, or he had committed it earlier but he is the accused of that offense. The police officer will ask him his name and address and execute a bond. If the person does not give the correct name and address, or he has given the name and address but not ready to sign the bond, or he has given the name and address but the police officer believes that the name and address is wrong, in either of the cases he will arrest him and taken into custody to the police station. There, if he ascertained to give the right name and address and accused is able to sign the bond, then he will be released. If not, then within 24 hours he has to be produced before the magistrate. उसके बाद मजिस्ट्रेट देखेगा कि उसको कस्टडी में रखना है या छोड़ना है, और अगर सही नाम पता मजिस्ट्रेट को भी नहीं बताएगा then he would be in custody. बॉन्ड अगर साइन करोगे तो विद श्योरिटीज या विदाउट श्योरिटीज, और अगर फॉरेनर है या नॉन रेसिडेंट इंडियन है, इन दैट केस द श्योरिटी इज नेसेसरी. Clause 3 is about 24 hours. Should the true name and residence of such person not be ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient surety, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction. Now next is arrest by private person. जैसा कि मैं और आप, हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं. If a person is committing a wrong right now in front of me, and I am a private citizen, and I am seeing you committing that offense, I am seeing you to committing that offense, in that case I can arrest you here. अगर मैं देखता हूँ, मैं प्राइवेट सिटीजन हूँ और मैं देखता हूँ आप मेरे सामने कोई ऑफेंस कर रहे हो और मेरे सामने कर रहे हो, तो मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ. बट आफ्टर अरेस्ट आई कैन नॉट टेक यू होम. ये नहीं कर सकता चलो मेरे साथ रहना कुछ दिन. आफ्टर अरेस्ट एज सून एज पॉसिबल आई वुड हैंड यू ओवर टू द पुलिस ऑफिसर. काफ़ी लोग करते हैं ना, जैसे घर में कोई चोरी करने आता है, चोर पकड़ लिया जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद फिर पुलिस ऑफिसर आता है तब तक उसको पकड़ कर रखते हैं घर में. दैट इज अरेस्ट ओनली, बट दे वुड हैंड ओवर हिम टू द पुलिस ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल. जैसे पुलिस ऑफिसर आता है, उनके रीच में आ जाता है, तो वो उसको हैंड ओवर कर देते हैं. So let's see section 43. Any private person may arrest or cause to be arrested. खुद अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी और से अरेस्ट करवा सकता है, अरेस्ट करने के लिए बोल सकता है. May arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense. ऑफेंस कैसा होना चाहिए उसके प्रेजेंस में? नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस. सो द ऑफेंस शुड बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर दैट पर्सन शुड बी ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर द और कॉज टू बी मेड ओवर
any person so arrested to a police officer, or in the absence of police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station. अब आपने जहाँ पे गिरफ्तार किया तो वहाँ पे अगर कोई आसपास पुलिस ऑफिसर है तो उसके हवाले करो। कई बार क्या होता है कि पब्लिक में मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक a person is harassing a girl, that person is trying to outrage the modesty or insulting the modesty of women, insulting the woman, or otherwise he is doing teasing of the girl etc. इन सच ए केस वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उसको पकड़ सकती है और पकड़ के किसी भी पुलिस ऑफिसर के हवाले कर सकती है, और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है उसको ले जाकर थाने में पुलिस के पास पुलिस के हवाले कर सकती है। So it's an example. There are maybe several other examples also. जैसे पॉकेट मारने का, बस में पॉकेट मार लिया, ट्रेन में पॉकेट मार लिया, या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हैं उधर पॉकेट मार लिया और उसको पकड़ लिया पब्लिक ने। सो जैसे ही किसी व्यक्ति ने पॉकेट मारा तो उसको वहीं पे पकड़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस का वेट करे और गिरफ्तारी तभी होगी। ए प्राइवेट person can also arrest and handed him over to the police station, but that should be as soon as possible. ये नहीं है कि प्राइवेट पर्सन ने बहुत दिन तक उसको रखा गिरफ्तार करके और उसके बाद रिलीज किया। So it is not like that. That private person send him accused to the police station, to the police officer as soon as possible. Clause 2. If there is a reason to believe that such person comes under the provisions of section 41. अब जिसको पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया और पुलिस के हवाले किया, नाउ अब उसको पुलिस ऑफिसर के हवाले किया, then here after hand over him to the police officer, there the police officer would re-examine. Police officer here examine as to whether the police officer is competent to arrest him under section 41. If yes, then the police officer will formally arrest him. तो लिखा है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर shall re-arrest him. If no, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर उसको बॉन्ड वगैरह साइन करा के उसको रिलीज कर देंगे, पुलिस ऑफिसर रिलीज कर। इफ देयर इज reason to believe that such person comes under the provisions of section 41, a police officer shall re-arrest him, means formally arrest him. अब ये re-arrest क्यों लिखा है, वर्ड re-arrest, why it is written formally arrest police officer shall re-arrest him? अब मान लीजिए किसी प्राइवेट व्यक्ति ने किसी ऑफेंडर को 2 बजे दोपहर में 2 बजे गिरफ्तार कर लिया और उसको लेके गया पुलिस स्टेशन 4 बजे। अब पुलिस ऑफिसर देयर ही वुड एग्जामिन वेदर ही इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट हिम अंडर सेक्शन 41, और एग्जामिन करने के बाद उसको रीअरेस्ट कर लिया। अब यहाँ से 24 घंटे की जो काउंटिंग होगी वो कहाँ से चालू होगी, वेदर फ्रॉम द 2 o'clock या फिर आफ्टर हैंडिंग ओवर एट 4 o'clock। 4 o'clock से स्टार्ट होगी जब पुलिस ऑफिसर ने को दिया गया था। अकाउंटिंग वुड स्टार्ट फ्रॉम 4 o'clock. Why? Because police officer there re-arrest him after examining that he comes under the provisions of section 41 or not. So it is written he shall re-arrest him. Now clause 3. If there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on demand of a police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released. Means if the police officer is entitled to arrest him under section 41, he will formally arrest him, and after that section 57, 167 etc. will be applied. And if it is a case of non-cognizable offense, section 42 will apply. And if police officer thinks that he has not committed any offense, अब किसी ने मान लीजिए किसी प्राइवेट व्यक्ति ने ये सोचकर कि इस व्यक्ति ने चोरी किया और पकड़ लिया, but actually he has not committed theft, then in that case the police officer is satisfied that he has not committed the offense, then what? He shall release him.
अब ये रिलीज 169 में होगा, सेक्शन 169 में होगा या इस सेक्शन में होगा, दैट इज द क्वेश्चन। 169 में रिलीज नहीं होगा, व्हाई? बिकॉज 169 के रिलीज के लिए एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और यहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर भी नहीं लिया है। देयरफॉर दिस रिलीज विल बी डन अंडर दिस सेक्शन। हाँ, अगर उसको गिरफ्तार करने के बाद एफआईआर ले लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, then the police officer finds that he has not committed the offense, then the release will be under section 169. But at this stage the release will be under third clause here itself. So these are the small points and small topics. Make notes of them here only, otherwise you will forget. Now let's see section 44. When any offense is committed in presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained, as to bail, commit the offender to the custody. This is what magistrate, executive or judicial, either executive or judicial magistrate, either. When any offense is committed in the presence of magistrate, whether executive magistrate or judicial magistrate, within his local jurisdiction, मतलब accused ने offense उस एरिया, उस मजिस्ट्रेट के एरिया में, उस मजिस्ट्रेट के सामने किया है, उस मजिस्ट्रेट के एरिया में भी किया है और उस मजिस्ट्रेट के सामने भी किया है। अब किसी मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन है, मान लीजिए ये वाला, और वो वहाँ पर मजिस्ट्रेट खड़ा हुआ है, उसके सामने ऑफेंडर ने वो ऑफेंस किया है और उसके जुरिडिक्शन में और उसके प्रेजेंस में किया है। अब ऑफेंस का कहीं पे भी नेचर लिखा है, वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इट इज एदर ऑफेंस। So offense का nature could be either cognizable or non-cognizable, but it should be committed in presence of the magistrate and in the area of that magistrate, in his area. ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब कहीं किसी एरिया इधर दिल्ली के हैं और वो गए कहीं केरला घूमने के लिए। दिल्ली में भी एक पर्टिकुलर एरिया के हैं मजिस्ट्रेट साहब, मान लीजिए उनका जुरिडिक्शन है साउथ ईस्ट, और वो गए कहीं केरला घूमने के लिए। देन ये सेक्शन 44 नहीं लगेगा। 44 कब लगेगा? 44 तब लगेगा जब ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज एरिया इन हिज प्रेजेंस, और सेकंड क्लाउज पढ़ो, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस, यहाँ पे भी इन हिज प्रेजेंस है, in his presence, within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant. So they are talking about two things. Suppose this is the area of the magistrate, and judicial magistrate is present here, and in his presence accused A commits any offense. उसके प्रेजेंस में accused A ने कोई offense कर दिया, या फिर accused A ने कभी कहीं और उसके एरिया में offense किया था। accused A earlier in his jurisdiction done an offense. अब उस accused के लिए judicial magistrate is entitled to issue a warrant, and today that accused is present in front of the magistrate. Offense पहले किया, offense committed earlier, offense committed in such area regarding to which judicial magistrate is competent to issue warrant, and that accused is right now present before that magistrate. Or in the first clause, accused is committed the offense in front of the magistrate in his jurisdiction. In either of these cases, the executive or the judicial magistrate is competent to arrest him there and then himself, or competent to arrest him with the help of some person, some police officer or some private person, etc. So write down point for section 44. Under section 44, the arrest by the judicial magistrate himself or upon the order of the judicial magistrate
in his presence may be conducted only in his local area. Only in his local area. Under section 44, the arrest by the judicial magistrate himself or upon the order of the judicial magistrate in his presence may be conducted only in his local area. When? First point, if the accused has committed any offense in his presence in his local area. Second, if the accused had committed the offense earlier, had committed the offense earlier, but he right now present in front of the judicial magistrate. Right now he is present in front of the judicial magistrate and the offense was committed by him in such circumstances and at such place that the judicial magistrate was competent to issue an arrest warrant against him. And the offense committed by him was by the accused in such circumstances and such place that the judicial magistrate is competent to issue arrest warrant against him. At such place means under his jurisdiction. Such circumstances means ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जिसमें वो वारंट निकाल सके. ऐसा ऑफेंस ऐसे सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए जिसमें वो वारंट निकाल सके मजिस्ट्रेट. वन मोर पॉइंट टू से हियर इज दैट कि एक बार जब अरेस्ट करवा लेगा पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सामने तो उधर पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, ना 24 आवर्स देगा, डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा. और अगर पुलिस ऑफिसर को पुलिस कस्टडी चाहिए तो प्रोटेक्शन वारंट इशू करके फिर पुलिस कस्टडी लेगा. यहाँ पर 24 घंटे वाला सिस्टम नहीं लगेगा. एंड वन मोर पॉइंट इज दैट अगर मजिस्ट्रेट कहीं बाहर गया है एंड देयर समवन कमिट्स ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, देन in the capacity of private individual he could arrest that person under section 43. and 43 में एक और बात है, उसमें लिखा cognizable and non bailable, but a private person does not know which offenses are cognizable and non bailable. It cannot be expected to the private persons that he must know the offense be cognizable and non bailable or bailable or non cognizable. तो वो सारे डिफरेंस उसको पता है नहीं पता है. और कोई ऑफेंस हो रहा है उसके सामने, उसने अरेस्ट कर लिया किसी व्यक्ति को एंड दैट ऑफेंस इज कॉग्निजेबल बट बेलेबल. वेदर इट अमाउंट्स टू इलीगल डिटेंशन, द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इन दैट केस दिस प्राइवेट पर्सन गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी. सेक्शन 79 कहता है दैट इफ यू हैड कमिटेड एन ऑफेंस इन गुड फेथ अंडर ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट देन इट इज नॉट एन ऑफेंस. तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गुड फेथ में किया और आपको लॉ नहीं पता है. एवरी पर्सन डीम टू नो द लॉ ऑफ लैंड बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड ही डज नॉट नो द लॉ. उसने गुड फेथ में गिरफ्तार किया है अंडर ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सो ही वुड नॉट बी लायबल. नाउ लेट्स सी द गाइडलाइंस इन द डीके बसु में जो गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट दे रखी हैं. लेट्स सी, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं उस जजमेंट का प्रिंट आउट, उसमें गाइडलाइन दे रखी हैं. सो रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट द गाइडलाइंस आर गिवन और यू मे राइट डाउन और नोट इट डाउन और टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम द नेट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट wearing a clear identification mark by the arresting police officers. जब भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी करेगा देयर शुड बी ए क्लियर विजिबल मार्क ऑन द बैच विच ही हैज टू वेयर सो दैट द पीपल अराउंड टू नो, जो आसपास के लोग हैं उनको पता पड़े दैट हु हैज अरेस्टेड. सो इन द सिविल ड्रेस विदाउट दैट मार्क द पुलिस ऑफिसर कुड नॉट अरेस्ट अ पर्सन. दैट इज अ गाइडलाइन हियर. द सेकंड पॉइंट इज द पुलिस ऑफिसर carrying out the arrest shall prepare a memo of arrest at the time of arrest and be signed by at least one witness. Witness can be a person of the locality or the family member of the arrestee. It shall also be signed by the arrestee. जब पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करेगा there has to be a memorandum of arrest in which he would write that so and so person for so and so offense arrest at so and so place.
has been arrested by so and so police officer, and on that memorandum the local witnesses putting their signature. Normally they would look for two, but if one is there it is sufficient. और जिसको गिरफ्तार किया था वो accused, वो भी उस पर साइन करेगा. Now the third point is the arrested person shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him to be informed about his arrest and place a detention as soon as practicable. Suppose I am a police officer and I arrest a person, then I have to inform that person, and that should be done arrest के तुरंत बाद. ये नहीं है कि उसको थाने में ले जाकर तब उसको inform करना, वहीं पर arrest के तुरंत बाद inform that person that you have right to inform any family member or relative or friend about your arrest, and it is my duty to inform his family member etc. and also tell him where I have kept him in custody. Unless some extreme reason, safety वगैरह के लिए अगर कोई ऐसा reason नहीं है, then that relative or family member should be informed that मैंने कहाँ पर उस accused को custody में रख रखा है. The other point, the time and place of arrest and venue of custody shall notified by the police to the family member or friend to the legal aid organization of the district if the family member or friend lives outside of the district. हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन होगा. अगर उसी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में रहता है तो किसी कांस्टेबल को भेजकर या टेलीफोन या मोबाइल के थ्रू, या फिर जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में रहता है वो वहाँ पर पुलिस को भेजकर, किसी और ज्यूरिडिक्शन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में रहता है तो वहाँ पर पुलिस को भेजकर उसके फैमिली को इन्फॉर्म करवा दो. लेकिन अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है then in that case you can get the family informed through legal aid organization. Other point is the person get arrested must be informed. The person arrested must be told about his right to have someone informed. So ये तो बता ही दिया, that is already discussed. Other point is an entry must be made in the diary at the place of detention as the name, time and place of the arrest and the names of the particulars of the police officer in whose custody the accused is, and also the person who has informed about this arrest. So it is transparency. So if a police officer arrests any person, then it is about the transparency. He informed his family members and keep the details in the diary also. Plus that police officer also informing the headquarters also. This is about the transparency of arrest. कहाँ रखा है अरेस्ट के बाद वो भी बताएगा पुलिस ऑफिसर. So that is about the transparency. अब accountability means what? The police officer should be accountable about his health and safety. Next point is if the arrestee so request shall be examined at the time of his arrest, and the memo of major and minor injuries should be prepared. यहाँ पर लिखा है the arrestee so request, but now it is a rule. जब भी किसी को गिरफ्तार करेंगे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर कराएंगे. That is a rule. So request करे या ना करे, the police officer has to make the medical examination. This inspection memo should be signed by both arrestee and the police officer. So this inspection memo must be signed by both the police officer and arrestee both, and the copy of inspection memo should be handed over to the arrestee. फिर उसका जो मेडिकल कंडीशन है उसका एग्जामिनेशन करोगे, and copy of that to be given to the arrestee, and he would give it to his family members. The arrestee should be subjected to the medical examination by a trained officer, by a trained doctor every 48 hours during his detention in custody. जब तक वो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी. जुडिशियल में 48 आवर्स की ज़रूरत नहीं होती, जुडिशियल में नहीं होता, पुलिस कस्टडी में होता हर 48 घंटे के बाद. Now the next point is copies of all the documents including the memo of arrest should be sent to the magistrate
It can be the executive magistrate or it can be the judicial magistrate. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है, इट कैन बी ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑल्सो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो भेजोगे ही भेजोगे, यू मे सेंड इट टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजना इज कंपलसरी all these documents. Now the next point is the arrestee shall be permitted to meet his lawyer during interrogation, but he does not have the right to keep the lawyer with him during investigation. तो एक्यूज्ड ये नहीं कह सकता कि एक बार पुलिस ऑफिसर आ जाए कि इंट्रोगेशन में आप मेरे साथ बैठे रहो। वकील साहब से इंट्रोगेशन के दौरान मिल सकते हो, बट ये नहीं है कि इंट्रोगेशन में पूरी में उसको बैठा के रखा कि आप डर रहे हो, वकील साहब को बैठा के रखा कि उनके सामने मेरा इंट्रोगेशन करो, दैट इज नॉट परमिटेड। द लॉजिक इज दैट द पुलिस ऑफिसर हैविंग इंडिपेंडेंस टू इंट्रोगेट and the presence of lawyer permanently is not possible. You could meet the lawyer once a while. The last point, a police control room should be provided at all districts and headquarters where the information regarding the arrest and place of custody should be communicated by the arresting officer within 12 hours within arrest, and the information of arrest should be displayed at the conspicuous place of the पुलिस कंट्रोल रूम। जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके पुलिस कंट्रोल रूम में आपको ये अरेस्ट का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट तो कर लिया, क्योंकि और फैमिली वाले सोच रहे हैं कि ही हैज बीन किडनैप्ड और एब्डक्टेड, तो वो भी रिपोर्ट लिखवाएंगे ना कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो उस केस में जो पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो नोटिस पर डिस्प्ले है उससे पता चल जाएगा कि दैट पर्सन इज अरेस्ट। And the court in the end suggested that any violation of any of these guidelines will result into departmental action and also render the police officer subject to punishment for contempt of court. So ये कुछ guidelines हमने देखी और पढ़ी, हो सके तो और भी पढ़ लेना, जैसे लॉ कमीशन के जो recommendations हैं। There are several other cases on this topic. जोगेंद्र सिंह का केस है, लीलावती का केस है, तो ये केसेस भी पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार हायर जुडिशरी में नाम के साथ इसको पूछा जा सकता है। जैसे कि डिस्कस द सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट इन द लाइट ऑफ जोगेंद्र सिंह जजमेंट और इन द लाइट ऑफ डी.के. बसु जजमेंट। सो ऑल द इम्पोर्टेंट केसेस का नाम पता होना चाहिए। अभी हमने डी.के. बसु की गाइडलाइंस पहले इसलिए देखी क्योंकि हम जो आगे प्रोविजंस देखेंगे तो उनको हम कोरिलेट कर सकेंगे, दैट इज व्हाट हेल्ड इन डी.के. बसु। उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।